सीता कमला मुखमंडल हे विकटकुंडल हे कलि कललित वनमाला जय जय देवाललित वनमाला जय जय आरती राखेर तिलानी पानीको जलले 3 परिक्रमा गरिदिने। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य भनेको चाहिँ हात धुने। अब चामर डुलाउने। ओम जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषिवंश प्रदीप जयतु मेघा श्यामला कोमलाङ्गो जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द। अब अर्घ्य दिने। अर्घ्य देखाइदिनु त अगाडि जानु न देखाइदिनु। ओम
जातो दैत्यपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे दुनामा पानी छ पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतु यो पात्रमा लगाएको जल भगवानलाई घुमाएर उब्रेको चाहिँ एउटा फूल राखेर सबैजनालाई अभिषेक गरिदिनु पर्छ कर्ताले अथवा गुरुजीले अनि पुष्पाञ्जली वेदान्तार्थ निवेद्य चिन्मय पर ब्रह्मस्वरूपान्वितौ दिव्यौ नित्य किशोर रूप रुचिरौ गोलोकधामेश्वरौ भक्तानां प्रणय प्रकर्षमभितः संवर्धयन्तौ सदा श्रीराधा मुरलीधरौ मम हृदि क्षेमाङ्करौ साङ्गिरम् श्रीहंसं सनकादिकासुरऋषिं निम्बार्कदेवं गुरुं श्रीमाद्वादश सद्गुरून् श्रुतिपरान् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्टदेशिकमुखान् वस्मिन्दु सङ्ख्यायुतान् सर्वाचार्यवरान् जगद्गुरुहरिभ्यः परान् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणैरामृग्यपादाम्बुज हे सृष्टिस्थितिपालक श्रुतिनिधे हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं शरीरसंयोगयोगयोग्यम् अणुमि जीवं प्रतिदेहभिन्नं यत्रित्ववन्तं यदनन्तमाहुः अनादिमाया परियुक्तरूपं तेनां विदुर्वै भगवन्